Yeah, we're gonna get some more. Very sexy right now. Special
Probably tomorrow. You have to connect. I think. जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये एक अलाइव रैट है, अलाइव चूहा ज़िंदा, जिसको बेहोश करने के बाद उसकी सर्जरी की जा रही है। ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम लोग ताकि आप लोगों को ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो वहाँ से आप कुछ देख नहीं सकते थे, इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो ये सारा जो है ये हमारे जो फ्रेंड्स यूके से आए हैं और दूसरे मुल्कों से आए हैं, ये उनकी वजह से ये कामयाब हो रहा है। और ये पाकिस्तान में पिछले 11 साल से ये लोग आ रहे हैं और हर साल आते हैं। ये सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं और उनको जो पाकिस्तान के ट्रेनीज़ हैं, जो पाकिस्तान के सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं और जो सर्जन्स हैं पाकिस्तान के, जिनमें प्लास्टिक सर्जरी और ये बड़ी सेंसिटिव किस्म की सर्जरीज़ हैं, उनको ये सिखाते भी हैं और उनसे सीखते भी हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका पाकिस्तान में इलाज काफ़ी दुश्वार होता है, तो जब ये फिर आते हैं पाकिस्तान के दौरे पे, तो फिर उन दिनों में उनकी सर्जरी भी की जाती है, जिसमें पाकिस्तानी और बड़ा सेंसिटिव ये दिखाओ ज़रा, ये देखिए नाजरीन, ये 2 वेन्स हैं जिनको ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वेन्स को इन्होंने पकड़ा हुआ है और वेन एक ही है, लेकिन उसको अब ये जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको स्टिच करेंगे। और ये बड़ा सेंसिटिव मरहला है। और इसी तरह इंसान के जिस्म में भी बड़ी बारीक सी वेन्स होती हैं। बड़े सेंसिटिव ऑपरेशन है ये जो कर रहे हैं। और यही टेक्निक्स और यही प्रोसीजर जो है, ये अगर किसी का हाथ कट जाए तो हाथ को जोड़ने के लिए भी यही प्रोसीजर जो है ये यूज़ करते हैं। ये अभी जारी है। वो आपको बारीक सा धागा भी नज़र आ रहा होगा जो कि बाल से बिल्कुल बारीक है। अगर उसे वैसे देखें तो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे हम इसे वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं।
जी, हम देख सकते हैं कि ये बड़ा ही मुश्किल मरहला है जिसे हमारे सर्जन्स कर रहे हैं। और जब किसी इंसान का ऑपरेशन करते हैं तो उनको इन्हीं दुश्वार गुजार मरहलों से गुजरना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ईजी जॉब। तो इंसान के जिस्म में भी ऐसी बारीक नसें होती हैं, वेन्स हैं, जिनमें से अल्लाह ताला ने खून की रवानी पैदा की है और उनको इसी तरीके से जोड़ते हैं।
जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जो वेन थी उसे ऑलमोस्ट स्टिच कर लिया गया है। ये बस थोड़ी सी रह गई है। ये एक और स्टिच लगा। ये लें जी, ये मरहला जो है ये मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया है। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से बड़ी सेंसिटिव सी सर्जरी की जा रही है। तो यहाँ पे एक टाइम हुआ है एक ब्रेक का। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस आके फिर आपको आगे का जो मरहला है वो दिखाते हैं। लेट्स गो फॉर अ लिटिल ब्रेक, प्लीज़ स्टे विद अस, थैंक यू। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। तो आइए हम उसी मरहले को जो है वो आप आगे दिखाते हैं आपको, और उधर से ही शुरू करते हैं। पे आप देख सकते हैं कि ये अलाइव रैट है जिसको एनेस्थीसिया देने के बाद बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद उसे ऑपरेट किया जा रहा है। यही वो रैट था जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे माइक्रोस्कोप के ज़रिए। स्क्रीन के ऊपर बड़ा नज़र आ रहा था, यहाँ पे आप कुछ देख नहीं सकते, लेकिन ये रैट है जिसे बेहोश करने के बाद प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। ये जो सर्जन हैं वो सिखा भी रहे हैं, तो अब मैं माइक उनके आगे करूँगा ताकि आपको भी आवाज़ आ सके जो वो कह रहे हैं। ये ओके। I hope you can see this. This is the right femoral triangle of the mouse, and here you can see that we have done the anastomosis, and our anastomosis is functional. So we used 10-Prolene thread. This is the femoral artery, this is the proximal, this is the distal part. So by using these anchoring stitches we can see this. So when we flip it over, we can flip it and see it, that we can see that this is the beautiful anastomosis, and it is now functional. Because it's much smaller. It's much smaller, so it's much smaller than the digital artery. So if anybody has a press on this, I'm hopeful that they can manage the repair of digital vessels in humans as well. Yeah. And this is the first part of our exercise. The next one, we would try to do a vein or maybe a nerve repair. So our group has done it within like 30 minutes, I think. So between 25 to 30 minutes we have done the anastomosis on the rat. So this was all due to the training provided by the foreign faculty, and we are thankful to PAPS and PEPRAS, and especially our Professor Muazzam Nazir Tarar and Mr. Umraz Khan and his team, who have traveled a long way, and they have helped us and they have empowered us and have increased our knowledge and skill. So we are grateful to them. Thank you. थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपको कल बताया था कि आज अलाइव रैट के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे और उसकी सर्जरी करके दिखाएंगे और अपने ट्रेनिंग्स को बताएंगे कि इस तरीके से करते हैं। तो हमारे साथ हैं जो इनके स्पेशलिस्ट प्रोफेसर हैं जो कि यूके से आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया और क्या सिखा रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? Good morning, very well, thank you. Okay, what are they doing today? So you may recall yesterday we had a simulation using tissue from chickens. Essentially you get them from the butcher. So this is dead tissue, but it's very good for practicing the art of microsurgery, the dexterity, the precision. The candidates, the delegates learn how to operate under a microscope with the magnification
They learn how to use the instruments, they learn how to use the tissue handling. Today is one level up. So today what happens is we have a well-established model of training microvascular surgery, and that is to use a rodent, and in this case a rat. And the rat is anesthetized, there's vets around, they're properly looked after and cared for, and then I demonstrated using this sort of screen thing for them on one case, so that they understand step by step what to do. We had a couple of other videos for them just to reinforce what they learned yesterday, and now they are going to do that themselves. And I've given them a task. I said, as long as you can do this part of the operation well, then I suggest you've done successfully completed the task. So what is your next step, sir? So if today finishes well and everyone is happy, then for the following 2 days, Thursday and Friday, we will be operating on patients who are patients that are of this hospital. They're under the care of the doctors here. We are not charging the patients, so it's all free service. And these patients would have been operated on here anyway. So these will be patients who have very, very complex, difficult clinical problems, only solved by ability to do tissue transplantation. There will be facial head and neck cases of the limbs, upper limb and the hand, and lower limb, legs and knees and shin. And then hopefully the candidates and the delegates will learn how to apply what they learned here in the clinical scenario, and how to, if they come across problems, how to problem solve as well. So this is, are you guys doing anything else after this? This is it for today? No, this is it for today. It sounds very simple, but it is very, very difficult. The dexterity to be able to manipulate blood vessels which are probably 0.1 millimeters in diameter, the ability to put stitches into that vessel and get blood to flow again is not easy. And whilst we can make it look easy, it's because we are on the background of extensive clinical experience. We are trying to enforce in the candidates not to be intimidated by this technique, but use it as a friend, as an ally. And when they cross that bridge and they realize they're a friend and an ally, they become very, very able individuals. Thank you very much, sir. Pleasure. नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी पुलिस सेंटर मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे CPO आसन यूनुस साहब बैठते हैं। अभी हम उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे चंद सवाल करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर, उनका इंटरव्यू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CPO मुल्तान आसन यूनुस साहब के ऑफिस में, और वो निकलने लगे थे। उन्होंने भी हमें इमरजेंसी में 2 मिनट दिए हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। और सर मेरा आपसे एक ही सवाल करना सर, मैंने इसलिए कि आप जा रहे हैं सर, सिटी पुलिसिंग में पहले की निस्बत क्या तब्दीली है? मुश्किल सवाल जिसका 2 मिनट में जवाब शायद मुमकिन नहीं। देखिए जी, पहला काम ये है कि अगर आप किसी भी मुल्तान के शहरी से पूछेंगे उसको क्या तब्दीली नजर आएगी, पहला सवाल तो ये मेरे से नहीं, क्योंकि मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन सवाल तो ये कि मेरे शहरी क्या करें। ठीक है। डेली बेसिस पे हम तकरीबन 350 से ज़्यादा शहरियों का फीडबैक लेते हैं जो सिटी पुलिस से कोई भी सर्विस लेने आते। राइट। और अगर आप देखेंगे कि वो बड़ा ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पे शिकायत भी होती है पैसों की, करप्शन की,
काम ना होने की, काम डिले, लेकिन हमने उस फीडबैक को इस हद तक फॉलो करते हैं कि जहाँ एक भी खराबी है उसके पीछे उसको ठीक करें। मेरे ख्याल में पहली तब्दीली तो ये है कि यहाँ पर लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मेरी खुली कचहरी की सूरत में हो, चाहे हमारे फीडबैक की सूरत में हो, चाहे वो मेरी थानों के अंदर हमारी उसमें हो, क्योंकि थानों में रेगुलरली मैं कोशिश करता हूँ कि विजिट किए जाए। फिर दूसरी बात, सड़कों के ऊपर पुलिस की अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑन द रोड्स, इट हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोशिश की है कि जो हमारी पेट्रोलिंग थी उसको इम्प्रूव किया जाए और उसको विजिबल किया जाए। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम हमारा कोई भी पेट्रोलिंग व्हीकल बड़ी बार लाइट के बगैर नहीं। हमारा जो मुहाफ़िज़ स्क्वाड है वो प्रॉपर लाइट्स के साथ वाइट जो हैं हमारी जो सरकारी मोटरसाइकिल्स हैं उनके ऊपर है, उससे प्रेजेंस ऑफ द पुलिस आपको शहर में रात आप 3 बजे निकलें, 4 बजे निकलें, इंशाल्लाह आपको फोर्स सड़क पे ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमने जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है उसको फोकस किया। अब पिछले सिर्फ अगर मैं जून 2017 के फिगर्स की बात करूँ तो अराउंड 500 से ज़्यादा हमने जो हमारे रॉबर्स और डिकॉयट्स थे उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड्स कराई, जो शायद पूरे पंजाब में एक मिसाल है। अगर मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन इतनी शनाख्त परेडें आपको इंशाल्लाह कहीं और शायद इकट्ठी ना मिले। फिर हमने मज़ीद ट्रांसपेरेंसी ये की कि हमने जितनी भी रिकवरी है, अमूमन शिकायत होती है कि जी डाकू तो पकड़े गए लेकिन रिकवरी नहीं। आप वो देखिए कि अभी पिछले ही दिनों इसी वीक, लास्ट वीक में हमने तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा चोरों से लूटा हुआ सामान लोगों को वापस किया, और इन कैश इन काइंड दोनों। इस तरह मोटरसाइकिल्स हैं जो चोरी हुई या स्नैच हुई, जो भी असल मिली उनको वापस। फिर हमारी आप जनरल हमारी जो सर्विस डिलीवरी है, आप हमारा खिदमत सेंटर विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरी साउथ पंजाब में इतना इफेक्टिव हाईली IT बेस्ड सेंटर नहीं है। इवन कि आप उसका किसी भी लाहौर के किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट से मुकाबला, किसी और महकमे से भी इसका मुकाबला कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको पब्लिक सेक्टर में ये एक यूनिक एग्जांपल मिलेगा। क्योंकि हमारे 38 हमारे शोधा हैं, 38 और 38 के 38 शोधा के साथ हमारा वीकली रब्ता है, उनके जो भी काम हम कर सकते हैं वी लुक आफ्टर देम। इवन के 2 हमारी शहीद फैमिलीज थी, उनको कुछ रिहाइश का मसला था तो हमने उनको ऑफिशियल रेजिडेंसेज अलॉट कर। इकबाल शहीद के बच्चे यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस में रहते हैं पुलिस लाइन्स में, और उनके सामने हमने एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क बनाया जो उनके वालिद के नाम से मंसूब। तो वो एक प्रिविलेज बच्चे हैं जो अपने वालिद से मंसूब चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं। हमने कोशिश की है कि हमारे, आप इवन के देखिए कि हमारे शोधा के ऊपर इस जो हमने लोगों को, मैं मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बच्चों आपको क्या पुलिस के शोधा का पता? उनको किसी को नहीं पता। तो मुझे एहसास हुआ उनको इसलिए पता नहीं कि हमने उनको बताया नहीं। सही है। तो ये जब हमने अपने शोधा को दोबारा यहाँ पे लॉन्च, इस तरह उनकी खिदमात को दोबारा ट्रिब्यूट किया, तो आप देखिए कि अखबारों में पूरे सफ़े के एडिशन आए मुल्तान पुलिस के शोधा के ऊपर, और एक अच्छी उसमें है। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी पुलिसिंग की होगी, अगेन मुल्तान इज पायनियर इन अ वे के वॉलंटियर्स इन पुलिसिंग हमने शुरू किया। वॉलंटियर्स इन पुलिसिंग इज अ VIP प्रोग्राम जो सिर्फ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। हमने कोई इतना नहीं है कि हम लोगों को शामिल करें, कोई सियासी बात करें, कोई गैर सियासी बात। स्टूडेंट्स हैं, अपना रोल अदा करते हैं, ग्रेजुएट हो जाएंगे, नए आ जाएंगे। हमने उनको भी इंगेज किया, कोशिश की है कि उसके साथ 2 हमने स्टूडेंट्स को स्कीम्स दी हैं पुलिसिंग के हवाले से, एक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की और एक वॉलंटियर्स इन पुलिसिंग की। वो भी एक हमारा एक पर्सपेक्टिव हमारा चल रहा है। फिर हम मुल्तान इज वेरी यूनिक एट दिस मोमेंट, मुल्तान पुलिस, कि हमने इसमें अपनी ख़वातीन ऑफिसर्स को मेन लीड पोजीशंस दी। मुल्तान पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसके 3 मेन थानों की SHOs ख़वातीन।
SHO दिल्ली गेट खातून है, SHO गुलगश, ये शहर के बड़े थाने हैं। ये वो नहीं है कि छोटा 100 के क्राइम का थाना है। सही। जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर का पुलिस स्टेशन है उसकी तो खातून वैसी, मैं उसको तो गिन ही नहीं रहा। ठीक, हमारी मेन SP ऑपरेशंस गुलगश वो खातून है, SSP ऑपरेशन मुल्तान खातून है, DSP इन्वेस्टिगेशन खातून है, हमारे इवन के हमारी जो मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो भी खातून। सो मुल्तान में हमने खवातीन को भी यकसा मौके दिए हैं कैरियर प्रोग्रेशन के पुलिस फोर्स, और मुझे खुशी है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बात है कि जहां हम उनको प्रोग्रेशन के मौके दिए हैं वहाँ अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म भी बराबर रखे। ये नहीं है कि मेल के ऑफिसर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी और है फीमेल की, जो गलती है जिसकी गलती है वो भी बराबर है। तो हम एक कोशिश में है कि जनरल इम्प्रूवमेंट मुल्तान पुलिस में आए, और करप्शन पे वी हैव गॉन वेरी हार्ड ऑन करप्शन। करप्शन की शिकायत को हमने स्पेयर की। करप्शन, इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, साइडिंग विद क्रिमिनल्स, डिलेइंग ऑफ FIR। आप ये देखिए कि मुल्तान में पिछले 10 से 11 महीने में आपको एक भी FIR ना होने की शिकायत, रॉबरी, डिक्वाइटी, मोटरसाइकिल चोरी, इन 3 में आपको नहीं। एवरी 15 कॉल हैज एन FIR। वो आप चेक कर लें, हमने विदाउट बीइंग कि FIR बढ़ेगी या कम होगी, हमारा टारगेट ये है कि FIR जितनी मर्जी हो, हमने अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह जज करना है कि उसमें से हमने केस कितने वर्कआउट किए, कितने बंदे पकड़े। इस सारी सूरत के बावजूद हम पिछले 4 सालों के 5 सालों के रमज़ान के कंपैरिजन में लोएस्ट इन क्राइम गए इस तरह। तो एक हमारी कोशिश है, और हम ये कोशिश ज़हनी बात है शहरियों की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी इसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शहरियों की मदद इसमें। और आप देखेंगे, आप जनरली मुल्तान में आप किसी भी कहीं पे भी आप देखिएगा आपको पुलिस के बारे में नेगेटिविटी पहले से कम है। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया जी, काफ़ी है जी। नाज़रीन, ये थे मुल्तान आसिम यूनुस साहब। अभी ये खुली कचहरी में जा रहे हैं, हम लोग भी वहाँ जाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना दिल्ली गेट में। यहाँ पर CPO मुल्तान खुली कचहरी करेंगे। ये सामने साइलान बैठे हुए हैं, वो भी पहुँचने वाले हैं खुली कचहरी के लिए। तो आइए इनमें से किसी से ये पूछते हैं कि उनका क्या मसला है, वो क्या अपनी शिकायत लेके यहाँ खुली कचहरी में आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप खुली कचहरी में आए हैं, आपका क्या मसला है? सर, ये मोटरसाइकिल चोरी हुई है। अच्छा। इसके FIR हमारी हो गई, तो इसकी अभी कोई भी थाने में आए हैं 2 मतलब कोई हमारी बात नहीं सुनी। तो फ़ोन कर देते हैं कि आपकी FIR हो गई है, मैसेज आ जाता है। अच्छा। और कुछ भी नहीं। तो आप CPO साहब के पास आए हैं, कि हमारा ये मसला हल नहीं है। तो आपको क्या तवक्को है CPO साहब से? देखिए जी, माशाल्लाह आएंगे तो अल्लाह पाक खैर करे, देखें क्या कहते हैं, हमारे करें। मोहल्ले के अंदर और गाड़ियाँ चोरी होती हैं, पता नहीं चलता। हर दिन गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, कोई क्या नाम जनाब? मतलब मोहम्मद असलम डोगर, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 24 मुल्तान से। तो डोगर साहब, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं, क्या काम है, क्या मसला है? मुझे जो है थाने दिल्ली के साथ बुलाया है कि CPO साहब आ रहे हैं, जी सर। आप जो है ना थाने में तशरीफ़ ले जाएँ, ताकि लोगों के मसाइल जो है CPO साहब जो है यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, पुलिस के आला काम जो तशरीफ़ ला रहे हैं, आवाम के मसाइल जो है मौके पर सुनने के लिए हम उनका CPO साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ यहाँ आ रहे हैं और हम लोगों के मसाइल। माँ जी, ये दसो थोड़ा क्या मसला है, कादे वास्ते आए? मेरा के मतलब मेरा लड़ाई हुई गेम तो। अच्छा। मेरा पोत मेरा गेम खेलना पड़ता है, मेरे पोत लेना छोकरे को लड़ाई होती, पोत लड़े छोकरा पता नहीं क्यों आई, कौन आई कौन नहीं। मेरे पक्का मेरे को तुम पकड़वा रही थी 2 सालों मेरे बहुत 2 सालों में को तुम पकड़ाया था, आया नहीं मेरे घर अब पानी दीवार आया नहीं मेरे को आया मेरे कमा वाला मेरा काम कल मेरे पोत नहीं जान है कि मेरा पोत है नहीं करते को मर गया हो, मेरा पोत मर गया मुझे विरान जागन पर जाके 1:30 बजे छोड़ रही बेटी अकेले मुझे छोड़ रहा है वो 1:30 बजे अब सवाल आप पे है कोई
कटेंगे कोई अभी आपको ले ये आगे अगर पूछा देने वाल देने अगर पूछा देने उन मेरा पोता पकड़ा जब पकड़ गए अक्सर अपने पोता गिरना है उनके अपने पोता तो हो जाता है सीपीओ साहब मेरा पोता कितनी ना दिया छोकरा पकड़ा वो है ना मीर पूरा सारे रखी रहा है और मिले मेरे को तुम्हारे मेरे को दीवार टापते पैर मल्ले सोने नो दीवार टापते पैर मेरे जवान लड़ी कहीं कोई नहीं आता मेरे दिखा जवान पोतलो पिया आने दीवार टापते कन पर हाली मेरे को ताने मेरे को हाली आने अपने नाम का यो बजाय मेरे को तो पकड़ के चलो आंदे ने नो कर घर के बाहर खड़ी की है बेटा रोडों के पैसे लेना बाहर से मोटरसाइकिल जाए बोल अच्छा 3-4 महीने हो गए चक्कर लगा तो मैं थक गई अभी तक कोई पता नहीं चला और हमने कहा था ये सीपीओ साहब की अब देखें आप क्या सीपीओ साहब क्या बेवा औरत को घर में काम करके मोटरसाइकिल दे के दी बेटे को नाइट में पड़ता मेरा बेटा इससे मोटरसाइकिल जब वो पढ़ने के लिए मुश्किल हो गया बस बच्चा का छोड़ने में मुश्किल हो गया बस क्या चले इन्होंने खुद कॉल किया आपको हाँ जिन्होंने कॉल करके बुलाया तो बस फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जी सर मलिक मोहम्मद असलम डोगर सर मैं चेयरमैन हूँ यूनियन कौंसिल से सर गुजारिश ये है कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ लाए ताकि आवाम के मसाइल जो है शुक्रिया छोड़े काम की बात करें सर गश्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए ताकि जो है ना इसके जराइम में जो कमी है आप सुनाएं कहाँ पे गश्त नहीं है वो जगह मुझे बताएं जहाँ पे कोई आइडेंटिफाई करें जो थानों की सर हदूद में जितने भी है मेन रोडों पे इनके गलियों में गश्त होनी चाहिए आप गश्त चेक करें सर वहाँ पे चेक करें जहाँ पे नहीं है आप हमें बताएं हम वहाँ पे गश्त लगवा दें उन्होंने फिर कोर्ट ऑर्डर लेकर यहाँ के कचरा करवाया जिंदा पानी से गया बेहोशी की हालत बेहोशी की हालत गया अगर रिपोर्ट भी ना कि बंदा होशो हवास ना पानी से गया फिर खुद कशी थी उन्हें बेहोशी की हालत से गया पानी मौत होती पानी से जाके हो गया वो छोड़ दिया गया कि मेरा बेटा 5.5 साल बाद आया 6 महीने रहा वह कतल हो गया 5.5 साल की जी वो मेहनत की कमाई वो अपने सारिया भेजता सारिया भेजता है वो सू सऊदी अरबों रसीटा लैके आया पहले सारिया मना रही है कि तुम पैसे भेजदा नहीं जो दिखिया ना बैंक दसीटा फिर वो मन गए पैसे आ दूजे वो जी साड़ी नौं ही वो नजायज तल्लुकात नासर का उन्होंने घर रहा वो रात साढ़े घर पढ़िया गया पता नहीं किन्नी बार आता तो किन्नी बार जाता ये 2 वजूहात आ मेरा बेटे का कतल होया कैसी नहीं हुई जो जाता सी ना घरों पैसे लैन जाना होंगे सानू एक गल दसदा नहीं शर्म का मारा कि मैं सारिया पैसे दे दिता पैसे देने की वजह है कि मेरे इन्हों की पुट्ठी जी सी ना नंबर वो साढ़े मकान से हिस्सा बनता सी 15 लाख रुपये एक रात मैं खुद इनके घर चला गया शाबाश अम्मा घर में थी या नहीं थी उन्होंने कहा जी औरत नहीं है माई नहीं है मैंने कहा भाई मैं DSP हूँ मैं खुद आया हूँ क्या बात है कि मैंने 8-10 दफ़ा बुलाया अम्मा जी क्यों नहीं आ रहे दूसरे दिन अम्मा जी मेरे दफ्तर आ गए इन्होंने कहा जी मुझे पता चला कि आप गए हैं तो मैं आई हूँ मैंने कहा अम्मा जी मैं वो पहले वाला DSP आपके घर आए थे एप्लीकेशन लेटर लिख के IG को ठीक है बड़ी बात है ये माफ़ी चाहता हूँ मैं यही चीज़ हम समझ ये बस यही फर्ज है ये बेहतरीन अच्छा दोनों पार्टियों को फिर मैंने वो आगे इंसाफ होना ना होना हमारी किस्मत आप देखें ना मुझे भी आपने पंजाब में कोई जिला बताना जिस DSP आपके घर खुद आके नॉक करे के 8 महीने गल करनी 8 महीने छो जी दोनों पार्टियों मैंने कहा अम्मा जी मैं उन्होंने बुलाना वो काफ़ी दफ़ा आए ने तुहानू बुलाते रहे तुसी नहीं आए मैं थोड़ी इकट्ठे बैठ के सुनना कहते जी पहले DSP है सानू इंसाफ की तवक्का नहीं सी चलो मैं कहा अम्मा जी मैं तो नहीं है मैं तो नहीं आया हुआ दोनों पार्टियों ने मैं सुनिया अखीर ये होया बई इन्हां दा एक दूसरा दमाद है अकरम जो डेड बॉडी मिली ना सरिया तो वो डेड बॉडी लैन वास्ते भी अकरम जी असी इन्हां दा दमाद है मैंने कहा अम्मा जी मैं ओदा बयान लवना चाहना मैं ओदा बयान लवना चाहना वो की कहता दूसरी पार्टी ने कहा ठीक है जी ओदे तू भी पूछो मैं कहा अम्मा जी तुसी कदों पेश करसो मैनूं दसो इन्हें 2-3 दिन का टाइम मंगया उस टाइम उत्ते फिर पता चलिया भी अब योरी बीमार हो गया
अजे तक ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। अकरम दी अजे तक मेरे नाल मुलाकात नहीं हो सकी। एक मिनट सर जी, मैंने ये अखराज की तस्दीक तब लेनी है जब मुस्तफा फोड़ साहब के अखराज पे दस्तखत। शौकत हुसैन कौन? मालिक साहब। अच्छा हाँ जी बताइए ना जी। इन्हों के घर के सज्जे, इन्हों के घर के खब्बे पता नहीं कि किसी खुफिया कराल चेक करो। ये काम आप कर सकते हैं। आप ये देखिए, अगर वहाँ पे किसी नामालूम ने वेपन कर तो ये कोई ऐसा नहीं है, याद रखिएगा खाने वाले में चलाया तो यहाँ आगे गए 4-6 घर इधर 4-6 घर इधर DSI लगाई कपड़ों में। आप ये इंशाल्लाह केस ट्रेस कर लें। ठीक है जी, कर मोबाइल चल पड़ा था, पानी भी चल। जब मुलजिम पकड़े जाए, रिकवरी हो, उनकी शनाख्त परेड जरूर पकड़े जाए। देखो ना, 1 जुलाई को गया, 15-20 दिन में और नहीं है। 4 हफ्ते बाद मुझे इसकी रिपोर्ट जनाब ये बकुआ हुआ था उस वक्त खाने में बाद में बुलाया गया था। जब आप खाने में आ जाए तो वो दरख्वास्त के लिए बुलाया। अच्छा यार प्लीज़ थोड़ा सा सर आप भी बिहेव करना, आपकी मेहरबानी। ओके आपके आने से आती है। 1 मिनट सर प्लीज़, आप ओवर स्मार्ट मदद के साथ पहले आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे आपकी शिकायत लेने आया हूँ यहाँ फजूल बात सुनने में। ठीक है सर, मैंने कह दिया आपको। आप क्या लगती है चोरी का मदद के साथ शायद ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम हमारे साथ में मैं हाज़िर खिदमत हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इमरान बलोच। आज आए हैं जना हॉस्पिटल में, यहाँ पे बर्न यूनिट है और हमें पता चला था कि यहाँ पे कोई डेलीगेशन आया है जो कि 7-8 अफराद पर मुश्तमिल है। तो अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आइए आपको बर्न यूनिट दिखाते हैं। ये नई बिल्डिंग बनी है जना हॉस्पिटल में और
हमें सुनने में आया कि ये काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा काम हो रहा है। आइए जी। जी जी। And the lateral malleolus and 2 pins above, and you don't need any internal implants for that. And coming to spine, if there is a discitis in spine, you need to stabilize it. So titanium implants are put in for treatment of infection in spine with debridement. If you don't have that, the spinal discitis will not settle. I agree. So metal work in, which is infected, there's always a second option. I would not have the internal implant in a bag of bones, unless it's a private patient and I'm diarrhea short or something. But otherwise, medical indication for such cases, there isn't one for internal device. We would span it with an external device, and there is no absolute indication. There are options always. So when these guys get told they can't take it out, can they say, please, that's a problem? I know. Thank you. Thank you, Prof. About the cranial bone and cranioplasty infections. Dr. Farooq Shahzad. About cranioplasty infections. I'm a pediatric plastic surgeon. The reason why I chose this topic is that cranioplasty infection is a very significant problem. If you look at the data, on what study you read, the complication rate of a cranioplasty is up to 33%. So it's a very significant problem. The average cranioplasty infection rate that is quoted is about 10%, which is also pretty high. It's a very significant problem. So I am going to talk about, give you a little background about cranioplasties and what that means. A little background about cranioplasty infections, what kind of organisms are involved. Then the majority of my talk will be on the management of a cranioplasty infection, and then we will conclude. So cranioplasty or reconstruction of the cranial skeleton, the most common reason that we get patients for cranioplasty is trauma. So patients who have severe brain injuries, they get a decompressive craniotomy. And what ends up happening is that the neurosurgeon will take off the bone flap. They will preserve the bone flap in the freezer, and then they will come back usually 3 to 6 months later, and they'll put the bone flap back on. The risk of having an infection after a bone flap is about between 1 and 10%. And the reason is that when you take the bone off the body and you store it, it invariably gets contaminated. And in certain percentage of people, that contamination will translate into an infection. Tumors, certain brain tumors, you have to take the cranial skeleton off with the tumor, and that causes a cranial defect. Trauma and electrical injuries, especially over here, I've seen a lot of them in Lahore. So that's another common reason for a cranioplasty. Now there are 3 goals of a cranioplasty. The number 1 or most important is protection of the brain. You need the skull to protect the underlying brain. The next is aesthetics. One reason that is frequently overlooked is that cranioplasty is also a functional operation. It's not only a cosmetic operation.
there's a condition called the syndrome of the trephined, which is patients who have a significant portion of their skull removed, they will develop neurological changes. So they will have paralysis, they will have weakness, memory changes, problems with balance, coordination. And the idea is that because there's no bone, the atmospheric pressure is transmitted directly to the brain, and that causes problems with cerebral blood flow, with circulation of the CSF. And once you do the definitive surgery and you replace the cranial skeleton, those symptoms go away. So it is a real condition. Now, when we are reconstructing the cranial bones, there are two major techniques. One is autologous. You take bone from somewhere else in the body. The other is prosthetic. You use something artificial. Nowadays, this bone, the most common place where you can get bone is the cranial skeleton. So if it's a small bone defect, you can take an in situ outer table bone graft. If it's a larger defect, you can actually have the neurosurgeon take off the parietal bone. Rib is also a common method. This is actually a case we did here at Jinnah last time I was here. And you can actually split the rib, and you can less commonly used because you don't get that much bone, and there's a bigger donor site, so not frequently used for large. The most common materials that have traditionally been used are PMMA, hydroxyapatite, and titanium. Each one of them has their advantages and drawbacks, so I'm not going to go into that. Nowadays, of using an alloplast, one is there's no donor site, and number two is if you know in advance what you, and that really increases the accuracy and it really cuts down on your operative time. Now, bone allografts, people are using these. The downside with the bone allograft is the usual way where you get it is bone chips, or what we call DBX. It's used more commonly in orthopedic surgery as demineralized bone grafts. And orthopedic surgeons will they've been trying to do this for the craniofacial skeleton. People are using allograft for. The problem is it's not substantive, so it's little pieces, and you have to support it with something else. So you have to support it with a mesh. But it's something that's being kind of experimented with nowadays. Now, as I said, cranioplasty infections are a significant problem. The risk of having a cranioplasty infection is between 1 and 33%, depending on the patient, where the cranioplasty is done, the timing, the etiology, etc. Significant problem. The signs of a cranioplasty implant infection are the same as any other place, as for example an orthopedic infection. So you have pain, which is the most important sign. You can have redness, you can have discharge. You can have either a superficial or a deep infection. Superficial infection is where you have infection of the skin or the galea. A deep infection, you can have infections around the implant where you can get an epidural abscess. So these infections, if not picked up, it can quickly turn into a very serious problem. The organisms that are most commonly involved are skin organisms, which tells us that some sort of contamination in the most part happens at the time of the initial surgery. Cranioplasties that are done close to the sinus, for example, the frontal sinus, frequently you'll culture organisms that are found in the sinus. Anytime you suspect an infection, just like a bone infection anywhere else, you should get inflammatory markers, ESR, CRP. Unfortunately, in the skull, these are not very accurate. So only about a third of the time will the inflammatory markers be elevated. So the inflammatory markers are normal. That does not mean that the patient does not have an infection. It is a useful way of monitoring the progress of the infection. Some sort of imaging also needs to be done because you don't know if there's a deeper seated infection. So either a CT or an MRI is performed. And that CT or MRI will also help with further planning. Now, these are all the risk factors that have been investigated in literature for causing an infection for a cranioplasty. The two that are most consistent or undisputed are
radiation, or having reconstruction closer to the frontal sinus. Those two, very high risk of getting an infection. So if a patient is getting a cranioplast close to the frontal sinus, great, fluid around the implant, that fluid can get infected. The bone flap is stored in the freezer, that gets contaminated. Timing, people have looked at the timing after removing a bone flap. What is the optimal time to put it back? Traditionally, the teaching was wait at least 3 months, but nowadays, with the new literature, it doesn't make a difference. Materials, obviously, with an alloplast, the chance of infection is higher. The storage method, a special consideration in kids, because a large number of these children of these patients are children. And children, their skeleton continues to grow till they're about 18. So consideration should be given to using a method of reconstruction that is going to grow with the child. So preferring or using an autograft versus a cranioplast is the preferred method of treatment of these injuries in children. Thank you very much. What is your recommendation regarding the timing of cranioplasty in the defects after trauma with urine defects, tumor and infection? And secondly, is size of the bony defect has any implication on timing of reconstruction? If you've had a complication. Post-traumatic. So it depends. So if it's a decompressive craniectomy done by the neurosurgeons, then the management is you replace that bone flap, after a period of time. And usually neurosurgeons want to wait for about 3 months to replace it. If it's a primary traumatic defect where you have a soft tissue injury and you have a bony injury, then my preference is to deal with the soft tissue injury first. So to debride them sure about your debridement or the status of the soft tissue or the status of the sinus, there's a very high risk that your alloplast is going to get infected. So the first thing is to work with your neurosurgeon, do the neurosurgical part first, reconstruct, debride all the bone. If the frontal sinus isn't involved, cranialize the sinus, or obliterate the sinus, and then reconstruct the soft tissue. And then you wait. Usually I like to wait for about 6 months. And then by that time, neurosurgically, the patient is stabilized. Then you come back and you can use, whatever. Usually we use implants, alloplasts. It depends on the size of the defect. If it's a smaller defect, you can even use autologous bone. The method that I like is I like having the neurosurgeons involved. They can actually take different things. In residency, I was taught that anything bigger than a quarter, you should reconstruct. So a quarter is about this big. It really depends. There's no really consensus. But anything that's significant, bigger than this, probably should reconstruct. Also, to probably leave much bigger defects. Yeah, right. It also depends on the area, the sinus or. In America, for quarter will be the Right. So there's no question is regarding cranioplasty in children. Probably we have quite a few patients over the last 2 or 3 years where we have done this cranioplasty along with neurosurgeons. They are always reluctant to take bone and use bone as a material to replace bone in children. So I went through the literature, but probably bone grows with age. But what are your thoughts about using bone, particularly splitting the because bone is usually very thin, and usually you end up with taking full thickness, and then what we do is that we try to place that cement or the things which come while doing that contouring of the bone. We put it there at the donor site, and so it becomes really difficult. And have you tried ribs instead of this cranial bone? So any thoughts about that? It depends on the age of the kid. So if the child is a teenager, we'll use alloplast because most of their cranial growth is done. So it's not going to affect it that much.
Any kid younger than that would prefer autologous bone. Kids up to 2 years of age, you can leave gaps open because they're going to spontaneously ossify, they'll close their gaps. The problem age group is between 2 and 4, where their diploic space hasn't formed yet. And at that age, you can still split the bone. It's hard. So this case over here, this patient over here, he is he's 1.5 years old. So he had a little encephalocele. So we actually took this bone and put it here. So we actually split it. So you can actually split the bone. It is hard. Another thing that we use in that age group between 2 and 4 is we take a burr, we burr down the bone, get some bone dust. And you can save that bone dust and you mix it with some fibrin, like Tisseal, and it creates a little like a plate, pseudo bone graft. And you actually put it inside the defect. And there's actually papers out of Boston that have shown that those bone pieces, they ossify and they form bone. Older than 4 years of age, you can take the bone off and you can actually split it on the back table. Neurosurgeons are reluctant because they don't want to do the neurosurgical part. They don't want to take the bone off. But you can actually take the bone off. More than 9 years of age, you can actually split the bone inside too. But you don't get a big graft. You get a smaller graft. So if I need a big graft, usually with these kids, you need, these patients, you need a bigger graft. I just have the neurosurgeon take the bone off, and then I can split it on the back table, and that works really well. And for growth, that's the best thing. If you put an alloplast in a young child, there's theoretical concerns about problems with growth and also with fracture of the plate and dislodgement of the plate. I'm sure there is a paper also Farooq mentioned, but I think our experience with the electrical injuries where the intact bone is there, if there is any doubt about the viability, you always get the infection back even after the free flap. So it's hard to believe that a metal work can stay there without infection even when you put a free flap on. So I think I will take that paper with a pinch of salt. I will really not believe that paper. So that paper is out of Taiwan. Yeah, I know. Free flap everything. I know, but still, I think it's just using the logic and extrapolate our experience. I think try and put a free flap on a dead piece of tissue or an implant just defies the logic. Thank you, Farooq, for lovely effects as well as the presentation. Our next speaker is already here and he'll be talking about the diabetic. Thank you very much. I don't know how to follow that presentation. It was all over the place. Diabetic foot disease and surgical aspects in particular. Of course, there's so much to diabetic. Again, my disclosure is all the patients are my patients I've operated on. Again, we look at burden of disease. This is such an important thing when you're tackling a condition, is to see how well or badly placed you are, the country you're working in, compared to the rest of the world, and if you're in the league, high up in the league, how you can come down if it's a negative matrix. And people have looked at it, as you can imagine. Such a common condition affects a lot of people and causes misery to a lot of people. Some of the effects of it can be got rid of, and you can actually prevent complications from the disease. Particularly acceptance of peripheral neuropathy again as a role. The midfoot seems to dislocate away from the hindfoot, and that leads to impingement on the skin that is vulnerable. The navicular has been pressed out. That ray does not look normal. He was otherwise okay. This is a patient who had it, whom I treated. She was the mother of one of the consultant physicians. And he rang me up and said, oh, the surgeon wanted to amputate my mom's foot. Can you help? Because she really did have terrible sepsis. So she came to us. We excised the ulcer, as you can see.
So the underlying structure is not destroyed by this infection, so it's not complicated, it's a complex ulcer and amenable to reconstruction. And if you've got enough head pressure in the arteries, you can get a free flap to work. And that's the single most important message from this talk, is these are reconstructible with free flaps. We are traditionally very scared to do it because of the perceived high failure rate. Prevention, again, we've said this before, is better than the cure. So people do have these things called diabetic socks in vulnerable individuals. They take the pressure off, particularly the first NTP joint. There is a podiatry specialist foot care. They attend regularly, particularly if they're known to be vulnerable. Teamwork, again, you can't do these treat these in isolation. You go transarticular, as in this case. So this lady had unrelenting ulceration along the plantar surface, yet peripheral neuropathy, and really we tried everything to try and get this to heal. You can see the marks of amputation, and had to go quite proximal because we used the dorsal skin to heal the wound. But if you go back, she had a free flap there from us before, which gave her 5 years of good use of that foot. The basic investigations is a plain X-ray, but before that you look at how the control of the diabetes is difficult to gauge, but a surrogate marker is this glycated hemoglobin, HbA1c, and you can see the sort of red light, amber and green, sort of a traffic light system. Green is good, that's medium, and this is to be avoided. And no matter what units you use, you can sort of read them off, but it's generally, it is demonstrated to me, it brought me back down to earth, just as I thought I was Superman. It was a neck FASH patient. She had neck FASH, and the orthopedic surgeon was at another hospital in Taunton, which is about an hour south of Bristol, phoned me up saying, I don't think I can get this lady a good foot. Do you agree that I should amputate? Because it's a two-consultant decision. Excuse me. I said, no, I'd like to see her first. So I saw her. You can see we've excised the tissue even further. And there is a very good paper from South Korea on angiosomal excision. So the angiosome that we know, which we talk is real, I'm afraid. Still would have done the same thing, because we enticide, as I always do in the artery, but they are a bit more vulnerable than the general population of suffering Steele syndrome after you've got free tissue on these feet. Another mechanical thing that I've learned is try and avoid removing too much of the mechanically important bone, because it is big cavitation from the abscess. You can see that before the flap goes on, I have trimmed that just to get a nice flat surface. This is him at 3 months. He's healed up and he's walking on it. You must still look after his feet, because it's a lifelong attention for them. It's not that the flap will stop them having to do foot care. Best view, the calcaneum is often exposed, as is in this case the Achilles tendon. And again, this was purely from pressure. Couldn't feel her back of her heel, couldn't feel her feet, rubbed against new shoes, and before you had a BK on the opposite side, so it was a precious foot to save. This is initially with skin graft over the pedicle, but then after a thinning episode, you get that heel, and she can get her foot plant grade. She lost a limb 2 years after that, because of, again, repeat sepsis. Depressing it, within 3 years, 25% of them have come to an amputation, unfortunately. That's the reality. If you avoid a major amputation, in the other 2/3, you can prolong their life. Thank you. Fantastic talk. The next speaker, he'll be talking about the planning for bone flaps, and he'll come all the way from Barize, Italy.
and he is Mario Carabino, and he'll be talking about the bone flaps and how to set When I said to someone that I'm Italian, this is exactly what they think about Italy. So basically, pizza, Berlusconi, and thanks God we have the Colosseum. That's something that is not so bad. Berlusconi. Berlusconi, yes. It's still alive, unfortunately. But thanks God now America has Trump. So everything has changed on that side. Anyway, Italy is quite long, but it's definitely much smaller compared to Pakistan. And I would like to tell you where I'm coming from. I'm coming from this area, so deep north, and where my university is, that it's called the University of Insubria. So Insubria is between Lake Maggiore and Lake of Como. And it's a really pleasant place, and it's really green, so it means that it rains a lot. So basically, in the middle of this green part, when it's not raining, there is a small town called Varese, that is my place, and this is our hospital, that's a university hospital. The view is very nice, and as I tell you, in the real days where it's not raining, so 2-3 days by year, but anyway. So, as a plastic surgery department, we are doing everything, post-bariatric, skin cancers, lower limb reconstruction, and last year we organized the first course, and we are very honored that Mr. Humrat Khan has been joining us and teaching us how to deal between orthopedics population and plastic surgery population, start to collaborate together. It's a new concept in Italy, and we're trying to develop as much as possible. And we are doing hand surgery, breast reconstruction, and every kind of micro reconstruction as well. So it means a lot of hand and neck in any case, more than lower limb. So I would like to thank, obviously, the course director, so Professor Taral, that let me be here, and Mr. Humrat Khan, that is our connection, and obviously all the members of the faculty that really give me a lot of advices. And as I discussed with Farouk 2 days ago, it's a really great occasion for me to learn something. So Mr. Tom Bright teach me how to dance, and it was a great experience yesterday with all the music. And obviously, I mean, you have to learn from someone, so the master. So Mr. Khan, that's really, it was so great to dance. Anyway, I'm here talking about bone flaps. So these are the group of flaps that we think about that can be really useful. If you can manage all of them, obviously you can deal with every kind of situation. Starting from the radial bone flap, that is a little bit different compared to the classical drawing. So it means that nowadays we are used to take always a little bit lateral the flap. But if you want a real bone flap, you have to harvest the flap in the classical manner, so from the anterior part. And once that you start the dissection, that's where it means you have to stop just after the flexor radialis carpus, because in that case you have to go down directly to the portion of the bone that you want to harvest. So that's the only way. So it's a little bit different compared to what we are used to say. This is the amount of bone that you can harvest easily, and obviously you have to deal with the pronatus quadratus and the flexor pollicis longus, so this portion of the muscle has to be inside of the flap, so it's not so thin, it could be a little bit funky, but it's in the way that it is. And obviously we are not that used to harvest this bone flap because we are very afraid about the bone fracture in the radius. So it's not our first choice, but obviously it's something that you have to keep in mind. More particular and more used could be the scapular flap. Everybody knows that everything of the scapular flap is based on the superficial circumflex scapular artery that is running in the classical region between the quadratus of Vulpinius, so teres major, teres minus, tricepsis, and the scapular rim. So in this point we can harvest both the parascapular and the scapular flap in the same manner. So going down
after the skin incision of the region, going down to the fascia, harvesting the scapular flap, and then recognize the blood vessels that is coming from inside, so you need to do the dissection into the triangular space, identification of the deep branch of the superficial scapular artery, and these are the small branches that are entering in the bone. So once that you see them, you go on and cut immediately all the posterior muscle section that are in the bone, and then you decide that the size of the bone that you can harvest. After this, you will free the insertion of the anterior part of the scapula. Any question? I think he deserves a question. Assess, because obviously you want to go to the notch. How you assess the level of where you do the osteotomy? Oh, that's a good question. Basically, we look directly on the vascularized side, and we decide that on the touching where is the reach of the joint. So you can feel it by easily by touching on the side. Okay, since here it's the last vascularization part that we have, we can harvest proximal as much as we want. So in this way we do. And the ligament, the collateral ligament, it's really difficult to see, I think, because when you do the exposure of the medial femoral condyle, you touch the rim of the joint and you will touch again the collateral ligament. So you decide this size, and I will try to use for the defect that the longest part would be proximal. So it's the. Yeah. Thank you. Thank you. Super cold in Canada right now. Before I start talking, tissue engineering is super fun and everybody loves it right now, but it's nice to know who's talking to you. So my background is I was a forest firefighter for 9 years, so kind of complex, fast problems. I went to medical school in Canada, and then an undergrad, and then I had 5 years in Silicon Valley doing high-impact, short-term projects in medicine, and right now And my trainees and my department is going to be in trouble now, because we're going to introduce a lot of stuff for this. It started off with Umraz, and it was wonderful. It was like an expert telling us what to do and what is the right way of dealing with this very common problem. I'm sure we see a lot more than he does, and it's all because of the bad initial management. These fractures, these bony problems are dealt with by the most junior person, and that is the worry. And I think with this we're going to have reinvent or redefine the SOPs, especially in my department, and we're going to monitor it. Amna gave us what is wrong. The bug that bugs us in K Hospital is Acinetobacter. I did not even know what it was, and repeatedly we keep on getting it. We've done swabs in the operating room personnel, our staff. We didn't grow any from anyone, but recurrent we get Acinetobacter. I don't know what to think about it. Maybe we should get a culture in every patient that comes. Umar, it's brilliant. I can tell the orthopedic genes are brilliant. His father is my mentor as well, Professor Aftab, and he's the reason I came back from the UK. He was kind enough to give me a certificate that a job is waiting for me in Pakistan. And that's how I got into Stanmore, because the prof knew that I would vacate and go home. So Umar, it was fantastic. And he told me later on that Professor Aftab wanted to be a plastic surgeon. Thank God he did not. We benefited a lot. Excellent work. Again, Umraz's second talk, masterly, Hisham Taha, my friend from Iraq, Muzahim Taha. I don't know if he's related to you or not. He's a brilliant spine surgeon from there. And it's brilliant. Here's a German-based orthopedic surgeon speaking like an Englishman and giving us a masterly discourse on how to manage these things. Rashid gave you a reality check, and again the problem is we end up getting the worst kind of external fixator thing that you saw
is a routine here. It's not a one-off thing. And that's how we've evolved. We do not waste time, money, and resources. We give them the job or offer them the job, and if they don't agree, we tell them to go elsewhere. Yeah, don't waste our time. Farooq, it's brilliant. Such a master young man from Aga Khan and based in Chicago. It's a pleasure that you come back and impart your expertise to us. We are always eager to welcome such brilliant Pakistanis. Thank you very much for coming. And Mario, brilliant. I just come back from Milano and I've seen that area. It's brilliant. And I love the Italians. They are very akin to us Pakistanis. They can find ways around anything that you give them. And his discourse was brilliant. We need that. And Andrea, thank you for opening our eyes. But the problem is people with me, like me, who have a lot of gray hair, we want to wait for a decade or so for really things to be effective. We don't jump on the bandwagon. And I think a lot of problems these days is company-sponsored things which have no scientific evidence. And the youngsters especially get dazzled with this, but my advice to them would be to be patient, read in between lines, don't just read the abstracts, read the paper and you'll have some answers. And if you trust somebody locally, make use of his experience. So thank you all very much. It has been a wonderful day. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर उमराज खान जो कि यूके से आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस सेमिनार में किस लिए उनकी शिरकत थी और उन्होंने क्या कहा है। हेलो सर, हाउ आर यू? Good morning, good afternoon. I'm very well, thank you. Why you are here for, sir? Well, that's a difficult question to answer in one go, but I owe a lot of gratitude to this man here. The reason is both real, which is the need for the type of surgery we bring, the skills we bring, the experience we want to impart, and also the ideas we want to share. There is no such course like this anywhere, not even in the UK, which has lectures, clinical, live clinic, and hands-on as well as live operating. So, for the future of plastic surgery in Pakistan, reconstructive plastic surgery in Pakistan, courses like this are essential. Because young Pakistanis are finding it very difficult to get a visa to go abroad to train. Whatever the political reason for that is not the subject of this course. This course is to try and enrich whatever we have, the talent we have in this country for those who want to be taught. So that's what I see as the purpose of this course. The benefit, of course, will be themselves, the beneficiaries, and their patients, of which there are plentiful. That's great. So how you like it here, sir? I love it. I love it. I come every year and it's almost like a highlight. The team I bring often reflect on previous surgeons who come. We now have a clutch of anaesthetists who've been and they have a very positive experience, whereas before they might have had a prejudiced view of Pakistan. They leave with a very positive view. The next challenge for us is to bring across the nursing skills and teach the nurses on the care of these patients, both in burns, in acute trauma, in delayed reconstruction, children, all of that will be encapsulated, and that's our plan. That's great, sir. We welcome you here in Pakistan, and we really appreciate that you came here, and we all thankful to you, and hope you'll enjoy the visit, and you will enjoy the Pakistani food also. I love the Pakistani food, yes. He does. Thank you very much, sir. Thanks. Pleasure. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक? जी मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर मौज़म तारिर मेरा नाम है और मैं ये जो जनाब बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर है, मैं इंचार्ज हूँ इसका। तो हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपने इन दोस्तों के जो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, बाहर से हर साल आते हैं। 11वां साल है इनको आते हुए, और ये अपनी जेब से ख़र्च करके यहाँ पे आके हमारे जो यंग सर्जन्स हैं उनको ऐसी टेक्निक्स में ट्रेन कर रहे हैं जो पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी वो टेक्निक्स, और उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के बाजू, हाथ,
पाँव उनको जो बचा रहे हैं, जो तल्फ हो चुके हैं, कट चुके हैं, उनको दोबारा लगाया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। तो